So here I am continuing the same topic, the Himalayan mountains. So मैंने आपको previous कहा था कि कुछ portion उसमें से रह गए हैं. So there here I am continuing. But the most important thing for you is to remember these two bifurcation of the Himalayan mountains. Now what are these two bifurcations of the Himalayan mountains? This is the longitudinal division. Longitudes means as we go up. Okay. So this is the longitudinal division based on the height of the Himalayas. As it is discussed earlier that Himagiri is the highest with the 6,000 meters. Then the Himachal and Shivaliks nearly from 900 to 1100 meters. And this bifurcation is from west to east. And now they don't get confused that in the western part of India there are the stretches of Himalayas. No, this is totally wrong. So please don't get confused. This stretch we are concluding from this side because Himalayas are starting their stretch from the north to east. Himalayas are stretched from north to east. बट ये जो नदन पार्ट है इसका भी तो वेस्ट पार्ट होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल सपोज सी दिस इज द नदन पार्ट एंड दिस इज द सदर्न पार्ट. इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड टू यू अर्लियर दैट हिमालयास आर स्ट्रेचिंग फ्रॉम हियर, बट दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, राइट? एंड दिस इज द eastern part. So this we are discussing detail here. So this is the bifurcation from west to east division. But before going to the topic, I am going to discuss a very little topic with you. That is the prior in the video I have told you that most of the time in the summer vacations we used to go to some hill station. So where is it? Dehradun or Kotli Dun or Katli Dun. Actually these are between the Himachal and Shivaliks. So Shivaliks are the ranges from 900 to 1100 meters. So in between these ranges, right? These are the two ranges. So here are the valleys. Here are the valleys. So these valleys are known as the dunes, right? So what is the definition of the dune? The dunes are the longitudinal valleys lies between the Shivaliks and Himachal. Now move to the second portion. Here I am going to explain you about the west to east division. Now what is the west to east division? Basically you know that most of the rivers of India they flow from the northern Himalayas. So from the northern Himalayas I am taking some major rivers names. So this one is the river Indus. Suppose if these words are not visible to you, then also I am speaking loudly so that you can write into your notebook. It is river Indus, then river Satluj, river Kali, river Tista and river Dihang. I am repeating once again. River Indus, river Satluj, river Kali, river Tista and river Dihang. Okay. So now the portion of the Himalaya between these rivers, they have different names. So the portion of the Himalayas between these rivers have their different names from west to east. This is the longitudinal division. So the name of the longitudinal divisions are Himagiri, Himachal, Shivaliks. But here the names are different. So don't get confused. So the portion of the Himalaya between river Indus to river Satluj, it is known as Kashmir Himalaya. It is also known as Himachal Himalayas. It is also known as Punjab Himalayas. Here I am repeating again. River Indus and river Satluj, these two rivers, in between these two rivers the portion of the Himalaya is known as the Kashmir, Himachal or Punjab Himalaya. Now between river Satluj to river Kali,
The portion of the Himalaya is known as the Kumaon Himalaya. Kumaon. Now the portion between the Kali and Tista river is known as the Nepal Himalaya. Now the portion between river Tista and river Dihang is known as the Assam Himalaya. So river Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayan ranges, and this portion you heard about the seven sisters of India. So which are the seven sisters? The seven northeastern states of India are known as the seven sisters. So those seven sisters or seven small states are located in the northeast part of India. So this is the region where the hills, most of the hills lies, right? So this is the bifurcation. Now here I am repeating in the Hindi. So observe once again that हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हिमालय माउंटेन्स को। तो प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको हाइट की अकॉर्डिंग पढ़ाया था कि हाइट के अकॉर्डिंग जो है हिमालय के तीन नाम से है ना, तीन नाम है। सबसे ऊपर है हिमाद्री, उसके बाद में हिमाचल और फिर शिवालिक्स, वो हो गया। अभी देखो कई बार हम छुट्टियों में क्या घूमने जाते हैं, बहुत से लोग हिल स्टेशन जाते हैं, है ना। तो अभी देहरादून का नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर है। तो देहरादून क्या होता है, दून जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होती है, वो शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में लोकेटेड है और उसको हम लोग बोलते हैं डून्स, राइट। अभी सेकंड बाइफर्केशन है आपका वेस्ट से लगा के, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी हिमालय के अलग अलग नाम हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमने इनको जो डिवाइड किया वो रिवर्स की अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है कि दो रिवर्स के बीच का जो पोर्शन है हिमालय का उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो रिवर इंडस और रिवर सतलज के बीच का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय और पंजाब हिमालय, तीनों उसी के नाम है। फिर रिवर सतलज और रिवर काली के बीच का जो पोर्शन है हम उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर रिवर काली और रिवर तीस्ता के बीच में जो पोर्शन है हम उसे कहते हैं नेपाल हिमालय, और रिवर तीस्ता और रिवर दिहांग के बीच का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालय। और रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारे इंडिया की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया है द हिमालयन माउंटेन्स का टॉपिक। और यही मैं आपको समझा रही थी कि जब भी आप एग्जाम में लर्न करो तो आप इस फॉर्म में लर्न करो, क्योंकि इससे हम लोग जल्दी नहीं भूलते और आपका लर्न करना भी इजी हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।